Let's check. And I think we are live. Hello everyone. How are you? My name is Harshit Goyal and I'm from AdYogi. So guys, आज एक हमने बहुत बढ़िया एक एपिसोड एक पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं AdYogi एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है जिसमें हर्षित गोयल एंड आई एम फ्रॉम AdYogi. सो गाइस जस्ट अ सेकंड आई थिंक ऑडियो एको कर रही थी अब नहीं करेगी. ये थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस ना चलते रहते हैं बट यस आज एक AdYogi एक इतना बढ़िया पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है क्योंकि ना कई सारे इंडिया में ब्रांड हैं जिनको ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है स्केल अप करने में. प्रॉब्लम्स आती हैं एज अ ई कॉमर्स ब्रांड वो कैसे चले वो कैसे अपनी मार्केटिंग करे क्या सारी वो चीज़ें करे. तो इसी के ऊपर आज हम एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हमारा नाम है बिल्डिंग 100 CR ई कॉमर्स ब्रांड्स. मतलब यार सोचो 100 CR. और आज जो आप ये स्क्रीन में दूसरी मैम को देख रहे हो ना इनका नाम है मानसवी. थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ यार. तो हमारे साथ मानसवी जुड़ी हुई है AdYogi से. ये एफिलिएटेड है AdYogi के साथ वर्क कर रही हैं फ्रॉम 4 years एंड शी इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर. और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं मैं आपको बता दूं इनके बारे में. आप इनको ना एक पाइनियर फॉर डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हो बिकॉज ये आपको पता है एक एक ब्रांड का दिन में सिर्फ मार्केटिंग से 1 CR प्लस की सेल ले आती है. मैम इतना शांत बैठी अभी अपने बारे में सब बताएंगी. तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं. हेलो मानसवी, वेलकम टू द पॉडकास्ट. कैसे हैं आप? हाय, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन हर्षित. मतलब थोड़ा सा मतलब ओवर अचीवर टाइप बना दिया है मेरे को, बट ऐसा कुछ है नहीं. आई थिंक आई एम एक्साइटेड टू डू दिस पॉडकास्ट विद यू एंड आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट टाइम डूइंग अ पॉडकास्ट एवर, सो लेट्स होप इट्स अ ग्रेट वन. सेम है मानसवी. मतलब अभी ना मैं बात कर रहा था मानसवी से पॉडकास्ट से पहले. इतनी सारी वो चीज़ें बता रही थी. इतना सारा इनके पास सच बताऊं ज्ञान का भंडार है. इतना सारा इनके पास ज्ञान का भंडार है. मैं तो इतना सारा रिटेन भी नहीं कर पाया. तो मैंने कहा चलो यार एकदम ना लाइव चलते हैं. तो जो भी बातें होती रहेंगी ना वो सही साथ साथ रिकॉर्ड होती रहेंगी ताकि मैं दोबारा दोबारा उसको सुन लूँ. बट उससे पहले आगे जाने से पहले ना थोड़ा सा मानसवी से उनके बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले बात मानसवी आप अपने बारे में बताइए. ये डिजिटल मार्केटिंग आपने जो फील्ड चुनी ये डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग फील्ड ही क्यों चुनी आपने? वेल एक्चुअली परफॉर्मेंस मार्केटिंग फील्ड मैंने चुनी नहीं. मैंने तो स्कूल में फील्ड चूज करी थी, सिविल सर्विसेज. एंड एवर सिंस आई थिंक 11th और 12th grade that was my main goal. College, I went to DU, I went to Hansraj College. Even throughout college, my main goal was that I want to crack civil services and I want to get into the civil services. So last 2 years of college, I also did coaching for the same, and I was studying like after college. I think I took a break here and I was studying like 16, 17 hours a day trying to crack the civil services. I think I gave the prelims twice in that entire journey. At the end of I think studying for it for 2 years, I'd reached that stage where I was like, no, ab mujhse to ye nahi ho paega. I was like, I've done so much padhai and so much hard work over the last 2 years, and it's not getting me anywhere. And even before I'd started with all of this, I decided that I'll probably give 3 attempts, and if then it doesn't work out for me, then I will not pursue it. I don't want to go crazy about it, and I'll pursue something else. But then first second attempt में I was like, this is not my cup of tea. I don't think मेरे बस की बात है ये. And that's when I wanted to take a break, because of course when you're studying 16 hours a day doing like current affairs, history, geography, law, everything, you want to get into something light, something that's entertaining, sort of a little bit more creative. That's when I joined a course for digital marketing. Just randomly, I was on Internshala and I was like, I can't just sit at home and do nothing. I was like, I joined that course on Internshala. It was for digital marketing. And then on Internshala only, I found an internship with a digital marketing firm. So I went and interned with them. I was like, chalo, theek hai, 2 ek mahine, it'll pay you something also. Unlike all other internships, my internship was paid. So I was like very happy to do it. So I went in for that internship, and it was not exactly similar to what I do right now or what I did when I joined in AdYogi, but it taught
taught me graphic designing. We did like lead generation, etc. And I actually picked up on everything very well. So that is what stood out to me. And I think the internship was a very good experience for me, where I met this colleague of mine who told me about AdYogi, and he probably met Rohin at some event or at some place, and he told me that, I met this guy, he's very chill, and AdYogi has this opening, you should apply. I think you're picking up very fast. I think it would be a good fit for you. So that's how I ended up applying for AdYogi, and I came in for an interview. And I think my interview was what, 3-4 hours long. We had a very very long interview. First, I Oh, interviewed with Anshuk, and then amazing. Rohin came in later. So we had a long interview and a lot of discussions where Rohin was asking me all sorts of complex questions and mathematical questions, which I think till date I probably cannot answer, but all kinds of questions were asked. And that's when I started working with AdYogi. I think that was 4 years ago, 2018, March of 2018, so almost exactly 4 years ago. And when I joined in, we had very small clients. We had a very small team. I mean, we had, I think, 10, 12 people in the team. So we used to tell clients that हमारी team में 20 लोग हैं, because to say that we have like 10 people or 12 people doesn't sound that great. So we were like, yeah, AdYogi team is a team of 20 people, etc. and all. And our clients were very small budget clients, even less than 1 lakh per month, which right now, if you tell me that you have to run a client at 1 lakh per month, I'd be like, please, मेरे को नहीं करना है, because चिल्लड़ है ये, how do you हम how देखते do ही you नहीं है. optimize it? Exactly. Like, it's so difficult. And at that point, I remember when I joined in, I was so nervous, and I'd been given to like about 13, 14 clients. At that time, we used to just get n number of clients on day two of joining, and you just be told कि अब इसको संभालो. हाँ. So, and I had daily budgets of like 1400 for every client. And I was like, I used to have a notebook where I used to log that, okay, today I've increased budget by 20 rupees in my client. Let me see how the performance improves. And that's how we used to do it. From then to now, we've gone to 1 lakh per day, 1 lakh plus per day. And I don't know, like, the transition has been very smooth. I think our clients have grown in size. We have Yes, grown in size. Our team is like a definitely. 100+ member team now. So I think, मतलब आई थिंक दैट इज लाइक वेरी वेरी अमेजिंग. आपने इतनी अपनी लंबी जर्नी बताई. और मेरे को लगता है ना, यूपीएससी जैसे आपने बोला, आपने यूपीएससी करी, तो यूपीएससी एस्पिरेंट ना कहीं झलक जाते हैं. मतलब अगर चाहे यूपीएससी में नहीं करा, तो हम देख सकते हैं मानसवी यहाँ पे बैठी है, वो कहीं ना कुछ कर जाते हैं. जैसे मानसवी में डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में बिल्कुल धमाका मचा दिया. बट मूविंग ऑन मानसवी, जो आज का हमारा टॉपिक है, लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग. अगर मैं एक बात करूं, मैं एक बहुत छोटा सा ब्रांड हूँ. सबसे पहले ना Mhm. मैं इस नाम से डर जाता हूँ, यार परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यार ये क्या होगा, यार ये कैसे होगा. चलो मैंने वेबसाइट तो बना ली, मैंने वेबसाइट 10 15 20 हज़ार रुपए देके किसी से वेबसाइट बनवा ली. पर यार अब बात आई, सेल कैसे ड्राइव करूं, मतलब कस्टमर्स कैसे लाऊं, कस्टमर्स कैसे एक्वायर करूं. तो दैट इज द प्लेस वेयर मानसवी स्टैंड्स इन, एंड दैट इज द प्लेस वेयर मानसवी कैन हेल्प यू गाइस. तो इसी के ऊपर आज हमारा एक पूरा पॉडकास्ट है. तो मानसवी, कैन वी शेयर द स्लाइड्स प्लीज, इफ इट्स रेडी? Absolutely, absolutely. यस. Cool. I hope my screen is visible. Yes, absolutely, it is visible. तो yes, तो guys, AdYogi presents what is like performance marketing. आज हमारा पहला एपिसोड है विद मानसवी नेयोल एंड माई सेल्फ हर्षित गोयल, आज आपका होस्ट और दोस्त. तो मानसवी, बिल्कुल इसी से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ना, ये जो बिल्कुल एक डरावना सा वर्ड है, एक्चुअली ना आज भी मैं देखता हूँ काफी सारे ब्रांड्स, जो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, जो छोटे छोटे बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, उनको ना डर लगता है, यार हम बिजनेस में तो आ गए, अब हम मार्केटिंग का क्या करें, अब हम अपने बिजनेस को स्केल अप कैसे करें. मतलब छोटे मोटे स्केल अप तो आई थिंक कि कोई भी कर सकता है, बट जब वो उसको जेकब लाने की बात होती है ना, तो जेकब, आई डोंट थिंक एनी वन कैन ब्रिंग दैट जेकब इन देयर बिजनेस. तो मैंने इसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में बताओ. So see, performance marketing कुछ भी नहीं है. It's not a very complex word. It's just that previously, when everything was offline, there was offline retail. How you do marketing is TV, newspaper ads, hoardings, everything. But now that all your sales are driving through the online channel, of course you can't do TV ads, you can't do हम्म. hoardings and newspaper, because people are right now online. People are on Facebook, people are on Instagram, people are on Google searching for stuff.
So performance marketing is basically the tool that helps us drive sales to our online Hmm. websites and to e-commerce online. It's just a counterpart of what you do on your newspaper, TV, everything. Because now people are more present online, we have to, of course, have a good, strong online uh, performance marketing also set up, because if people are there, your ads also have to be there. यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमारे को करवानी चाहिए, क्योंकि लोग बाग हमारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग से काफ़ी रिलेट करते हैं। और जैसे जैसे हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, जैसे जैसे हम बिजनेस को स्केल करते हैं ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब आजकल अगर हम देखें इंडिया में, ये कैसा केस है, एमबीए एमबीए की तरफ हर कोई भग रहा है। एमबीए में काफ़ी सारी फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, बट मार्केटिंग ऐसा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन मेरे को लगता है जो कभी पुराना नहीं होता। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी वहीं पे एक जगह हमारी ले लेता है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमेशा मतलब सोचते हैं कि खर्चा होगा? क्या हमेशा सिर्फ खर्चा ही होता है क्या मार्केटिंग के लिए? देखो, कोई भी मार्केटिंग में खर्चा तो होगा ना, फ्री में आपको कौन ऐड दिखाने देगा? यू बिल्कुल। कांट एडवर्टाइज योरसेल्फ फॉर फ्री एनीवेयर. बिल्कुल। So you will of course have to spend money. Where you spend money is very very important. So you have to spend it in the right places and in the हम्म। for the right kind of audiences so that you get the kind of response you want. But yes, you have to spend money to earn money. That is a very basic concept. तो मतलब बिल्कुल। पैसा लगाना, it's not that you're burning money, right? It's gonna बिल्कुल। get you something, it's gonna get you visibility, so it's very very important. यस, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो पैसा लगता है। और हाँ, बिजनेस अगर हम कर रहे Obviously, हैं, yes, yes, of course, बिजनेस लगेगा ही अगर हम कर पैसा रहे हैं, तो थोड़ा मतलब बहुत तो हाँ. लगाना पड़ता है। और जिससे हमारे को एक लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी दिख रही है, एक लॉन्ग टर्म हमारे को दिख रहा है कि एक हमारा अच्छा फ्यूचर स्कोप है, तो थोड़ा बहुत पैसा लगाने में तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली आज की डेट में बहुत ज़रूरी है थोड़ा बहुत पैसा लगाना, हाँ। because with the online world you have so much competition every day. One new website is coming up, one new person has started their own brand. So to get kind of buried under all of the other competitors you have is very easy. So you have to make yourself हाँ। stand out. You have to advertise yourself so that people know that yes, your brand is also out there. यस, योर ब्रांड इज ऑल्सो आउट देयर, बिल्कुल। तो इसी के साथ मेरे को लगता है हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा सा ना इसी के बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कि व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बट लाइक व्हाई मार्केटिंग इज अ नीड फॉर ई कॉमर्स ब्रांड? मतलब ब्रांड्स तो हमारे कई सारे तरह के होते हैं। एक एजुकेशन होता है, एक टेक सेक्टर होता है, एक हमारा फिनटेक हो रहा है, काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। बट ई कॉमर्स ब्रांड मेरे को लगता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेजरली हमारे को कस्टमर्स एक्वायर करने होते हैं, हमारे को ऑर्डर्स लाने होते हैं। तो आपका क्या टेक है इस पे कि मार्केटिंग हमारे को ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए पर्टिकुलरली क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों इतना ज़्यादा हम फोकस करना चाहिए? अगर फॉर सपोज आज मैं एक शॉपिफाई पे अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ और मैं अपने 100 प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट कर दिए, तो मेरे को क्यों ज़रूरत है ई कॉमर्स ब्रांड मार्केटिंग की, परफॉर्मेंस मार्केटिंग Well, see, as I said earlier, there are so many e-commerce brands coming up nowadays that it's very easy to get buried under all of the others. Plus, e-commerce website is present on the online world. So it's not like you're walking into a mall and you see a store and you can just enter and say that, oh wow, today I've discovered a store. की? It's बिल्कुल। not that easy to get discovered online. So first of all, how marketing will help you is it will help you get discovered. बिल्कुल। Second, what it will do is it will help you get discovered by the right people who will ultimately become your customers. कस्टमर्स। So that's why I would say that marketing becomes very important for e-commerce brands because of these two main reasons. Plus, now we know since ever since COVID has come into our lives, people have turned to online shopping हम्म। much more as compared to offline, because you don't even get the opportunity to go out and step out and go shop outside anymore. So e-commerce brands are what people turn to. So right now, because so many people are online out there trying to look for the right brands for themselves, it's very important to make sure that you are making yourself visible to the right kind of people, and you're doing some kind of marketing effort so that you can be discovered. Because just sitting out there not doing marketing, I mean, you will probably get discovered by a handful of people, but we don't एब्सोल्युटली। want a handful of people, right? We want to scale the brand to 100 crore business. So बिल्कुल। 100 crore to करना है। without marketing nahi aayega. Exactly. और एक्चुअली मैंने ये देखा है, काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, काफी सारे मतलब उनके
टीम्स तो होते हैं कि 100 CR 100 CR 100 CR, बट उनके पास ना एक प्लान नहीं होता, उनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता, उनके पास एक विजन नहीं है, बस सोच रखा है कि 100 CR करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। नए नए ब्रांड्स खुलते हैं। मेरे को लगता है एक चीज और, अगर मैं इसको समराइज करूं, जैसे आपने बोला कंपटीशन, इसमें मेरे को लगता है कितना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, और बड़े बड़े प्लेयर्स इतने बैठे हैं कि अगर हमारे को मार्केट में स्टैंड आउट करना है तो कुछ ना कुछ तो हमारे को अलग करना पड़ेगा। Absolutely, absolutely. See, even if you're the most loyal customer ever, आजकल temptation इतनी ज़्यादा है. There are so many new brands coming up that you are bound to try यस। somebody else. Like जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है. दिस इज बहुत। जो आजकल के मिलेनियल्स है, दे वांट टू ट्राई न्यू स्टफ एवरी नाउ एंड देन. दे वांट टू बाय न्यू स्टफ, दे वांट टू डिस्कवर न्यूअर ब्रांड्स, they want to eat better. When it comes to e-commerce, for everything they're just always looking for something new. अरे यार यस। आज कुछ नया ट्राई करते हैं. Is सैलरी that आ रही think है आज। yeah, exactly. So I think that is why you do need a comprehensive plan. ऐसा नहीं है कि बस चलो कैंपेन में पैसे लगाए और चलो बस वापस अभी रिटर्न्स भी आ जाएंगे. Of course, हाँ। you have to make sure that you're reaching out to the right kind of people. You're using the right kind of content to reach out to these people. हाँ। और वो जो आपका मार्केटिंग एफर्ट्स है उसको भी सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए. फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल आपकी मार्केटिंग अच्छी चल रही है पर आपने लॉजिस्टिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, so of course you will face a lot of trouble because you बिल्कुल। will not have customer retention. And if you're doing amazing on Facebook, you have great ads, but your website is not functioning, people are not able to place orders, then बिल्कुल। again there's trouble. So every channel has to go hand in hand, everything has to work very well, everything has to function perfectly in order to get to that big 100 CR number, and everybody has to put in efforts for that, including us at AdYogi for हाँ। all of our brands to make sure that we take as many brands to the 100 CR level and more as soon as possible. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे को ये बात तो बिल्कुल समझ है। आपने ना एक वर्ड यूज करा मानसवी इसके बीच में, मिलेनियल्स। अब मेरे को लगता है कि अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया में आज भी यूथ पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा एक मेजर चंक है। अगर हमारे को मेजर चंक को सेगमेंट को टारगेट करना है, अगर हमारे को मिलेनियल्स को टारगेट करना है, तो हमारे को मतलब एक बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन, तो हमारे को कैसा एक ब्रांड बनाना चाहिए, किस टाइप का ब्रांड बनाना चाहिए, या मतलब हमारे को कोई सेगमेंट मैटर नहीं करता, जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं वो मैटर ज्यादा करता है। I think yes, in such cases, how you advertise also becomes very important. Of course, जब आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए करते हो तो आपको अप्रोच भी अलग अलग लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल विद अपैरल्स, इन्फ्लुएंसर कंटेंट बहुत अच्छा काम करता है, और just a trendy influencer who's very popular or a celebrity who's very popular is enough to convince me that okay, ये product maybe we should buy. यस। But when it comes to something else, let's say if it's a food or a health and wellness product, then as a millennial, as a person who is more aware of stuff, we want to know कि जो चीज हम परचेज कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, why we should be purchasing it. So there you can't just say कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, ये लो खरीद लो. अगर आप च्यवनप्राश भी आज के डेट में खरीदने जा रहे हो, you will get like 7 varieties of that. So now how do I become that one Chyawanprash who's gonna be preferred by most of the audiences? There, of course, your marketing, the way you're selling your content becomes very, very important, I would say. हाँ हाँ। और ना मेरे को क्या लगता है, मैंने ना कई लोगों से सुना है कि यार मिलेनियल्स ही तो है, इनको तो कुछ भी पागल बना के बेच दो, ये इनको तो हम कैसे भी कुछ भी बेच सकते हैं। आपको, मेरे को मतलब Correct. पर्सनली मुझे ये नहीं लगता। आपको इस बात पे क्या व्यू लगता है कि मिलेनियल्स को बेचना आसान है, उनको मुश्किल है टारगेट उनको करना? I think किसी को भी प्रोडक्ट्स बेचना आसान नहीं है, whether it be millennials, whether it be the X generation that's coming up now, or whether it be the generation of our parents. It's not easy to sell to anybody. यस। And the thing is, all of them are online right now. It's not just millennials, it's not just the latest generation, it's also our parents, even in some cases our grandparents. So you have to consider everybody, but and किसी को भी बेचना is not easy, especially now given that we have so many options. Like let's say 10 years ago you wouldn't have that many options for all of the products, and you won't be able to reach out to so many websites that easily. You would have your neighborhood store, and you that's the best you could do on a day to day basis. यस। But today, sitting at home, I can reach out to any kind of seller that I want to, whether it be for my groceries, whether it be clothes, whether it be technology. I can get anything that I want. So when ऑन when पॉइंट। we have
the access to so many things, how do you think that you can just sell anything to anybody? That you can't just sit there and say कि इनको कुछ भी बेच लो and wait for the fluke to work for you and say that अरे चलो आज मेरी मार्केटिंग चल जाएगी। वो तो फिर तुक्के वाली मार्केटिंग है, वो 100 करोड़ वाली मार्केटिंग नहीं है। सही बात है। मतलब वेरी वेल सेड, बिल्कुल ऑन पॉइंट के तुक्के वाला काम तो हमारे को कुछ करना ही नहीं। अगर हमारे को काम करना है तो लॉन्ग टर्म करना है, एक सस्टेनेबल वे में करना है जो लंबे समय तक चले। आज अगर हम छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब लोग बाग ना चाहते हैं इंस्टेंट मनी आ जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इंस्टेंट मनी वाला ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। हमारे को रहना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे करें, हम लॉन्ग टर्म में स्केलेबिलिटी कैसे लाएं। तो उसी के साथ मनस्वी, Absolutely. आई थिंक वी शुड गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सबसे बड़ा सवाल, हाउ शुड आई Yes. स्टार्ट विद मार्केटिंग, हाउ शुड आई गो विद डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कैसे करूं। मतलब आपने इतना सारा बताया, इतनी सारी चीजें बताई, Hmm. पर करूं कैसे? I think your my answer might be a bit counterproductive to what we do, but I would say start off with organic presence. At least build yourself on your organic sales channels, on your organic social media pages a little bit. कि आप अपने product को organically थोड़ी following तो बढ़ाओ, because if you start with zero followers, zero everything, it's going to take a lot of effort. So what we also want is that if we already have a couple of engaged users who are coming onto our page regularly, who are engaging with our content, who are viewing the videos we put up, who are seeing the images, who are visiting our website, then it also gives us an idea of who our target audience could be. So I Yes. would say the first place to start would be your own social media, which is Facebook, Instagram, even YouTube, because YouTube Yes. consumption has increased a lot in the अलॉट। last 2 years. So मुझे क्या लगता make है, sure, सॉरी टू कट यू इन हाँ जी, बिटवीन, please go ahead. मुझे क्या लगता है कि आजकल ना लोग टीवी तो बंद हो चुके हैं घर में। आजकल जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे Absolutely, जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, प्राइम पे जाएंगे, exactly. यूट्यूब पे जाएंगे, टीवी तो बंद हो चुका है। आजकल ऑन स्क्रीन ही हमारा लैपटॉप, मोबाइल ही बचा है, जो बचा है। हाँ। Exactly. यस। And see, इतना करने में तो पैसे भी नहीं लग रहे, आपको बस थोड़ी सी एफर्ट करना है, and you have यस। to just create content, good content which people are engaging with, because once you have that, you have a solid base to build a brand on top of that. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मतलब हम सबसे पहले अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? वेबसाइट बनाने के हमारे पास ऑप्शंस हैं। यू कैन लाइक देयर आर सो मेनी वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। यू हैव वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, फाइंड। There are, I think, n number of platforms out there nowadays. So we just need to find the right kind of platform that would work well for us, that suits our needs. Set up your website on that, and I think just get started. Website तो अगर आपको ज़्यादा, to begin with at least, if you don't want to put in too much of an effort, you can just start off with a very simple website and enhance and refine it once you go ahead and once you have more capital to invest into the यस। website. But I would say if you're setting it up on your own, keep a clean structure, don't try to complicate it too much. आप ये सोचो कि उसको बहुत फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, you don't have to have too many features, as long as a person can use that website easily and check out, जब तक वो मतलब add to cart करके buy कर सकता है, your website is fine. ग्रेट, ग्रेट। एंड उसके बाद हम पैसों वाली मार्केटिंग, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, पेड मार्केटिंग बोलते हैं, वो कब स्टार्ट कर सकते हैं? वो आई थिंक वंस यू हैव अ गुड बेस सेटअप एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपकी वेबसाइट अच्छी है और आपका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, यू आर गेटिंग क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम, एट दैट पॉइंट आई थिंक यू सेट अप योर marketing. You can start off with some traffic campaigns to drive some good traffic to your website, and then we can start off with conversions objective and try to drive purchases also. Of course शुरू में मुश्किल होगा, because generally nowadays what happens is, to validate a website people will go to their Instagram and ये Facebook कि अरे ये कुछ fake order system तो नहीं यहाँ है, कुछ is my झोल am तो I नहीं going to है? get hacked out of, yeah, exactly. So obviously that is why I mentioned कि Instagram Facebook presence थोड़ी पहले बना लेना चाहिए. बिल्कुल। But once you do that, once you have your website set up, you can start off with your marketing. It's going to be slow going for at least first 2-3 months, यस। but once it gets into the groove, I think you'll be set. You'll be able to improve upon the website also. Instagram followers also organically will continue to grow. ग्रेट, ग्रेट। आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। यस, सबसे बड़ा सवाल, Facebook versus Google.
Yes. एकदम मेरे को आपकी एक्साइटमेंट दिखी, मुझे लग रहा है आपके पास Yeah. बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए बोलने के लिए, बट I think हाँ Facebook versus Google deserves a separate podcast of its own हाँ, because, yeah. डन है इस पे, कभी कभी ना कभी तो फेसबुक वर्सेस गूगल पे एक और पॉडकास्ट करेंगे, बट अभी अगर हम ब्रीफ में बात करें, क्योंकि ना वैसे तो आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग हमारे को सुन रहे हैं सबको पता होगा कि हमारे पास दो चैनल्स हैं मेजरली पेड मार्केटिंग के, एक फेसबुक मार्केटिंग है, Hmm. एक गूगल मार्केटिंग है। गूगल शॉपिंग से हम कर सकते हैं, काफी सारे हमारे पास सोर्सेज है गूगल मार्केटिंग के, फेसबुक मार्केटिंग के। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है, और आपको क्या लगता है कि अगर हम फेसबुक पे एड्स चलाएं तो ये वाले एड्स चलाएं, और गूगल पे एड्स चलाएं तो ये वाले? फॉर सपोज अगर मैं एक छोटा ब्रांड हूँ, एक टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो मेरे को फेसबुक पे किस तरह के ऐड चलाने चाहिए, और मेरे को गूगल पे किस तरह के ऐड चलाने चाहिए, और मेरे को यूट्यूब पे किस तरह के ऐड चलाने चाहिए? आई थिंक मैंने यूट्यूब इसलिए नहीं डाला बिकॉज यूट्यूब इज अ पार्ट ऑफ गूगल ओनली। सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसको यहाँ पे नहीं पता, तो हाँ, आपको क्या लगता है मेरे को किस तरह के ऐड किस पे चलाने चाहिए, और बेसिक इसका पहले डिफरेंस क्या है? सो सी थोड़ा सा फेसबुक गूगल का बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है, फेसबुक इज सॉर्ट ऑफ पुश मार्केटिंग बिकॉज आई एम स्क्रोलिंग ऑन माई इंस्टाग्राम, आई एम स्क्रोलिंग माई फेसबुक वॉल एंड आई सी एड्स इन बिटवीन। Whereas गूगल में जनरली क्या होता है दैट यू सर्च फॉर समथिंग, लेट्स से मैंने कहा कि आई नीड टू बाय फेस्टिव कुर्ताज और फेस्टिव फुटवेयर एटसेट्रा, एंड देन गूगल रियलाइजेस दैट मेरे को उस चीज की जरूरत है, एंड देन इट शोज मी दी एड्स। Versus YouTube also is sort of push कि आप कोई random videos देख रहे हो YouTube पे and then you see ads in between. So Google will always give you slightly more relevant traffic, but it will depend on who who sort of, you know, who's looking for you. हम्म। So Google may, where there is demand, your ads will show up. Where there is not demand, of course, your ads will not show up. So anytime that you get traffic from Google, it will be more relevant. Whereas on Facebook, it'll always give you a better opportunity to find newer people who might like your product. So I would say there's no one winner in the two because you need a balance of the two. यस। And you should do both of these channels. Of course, when you don't have too many funds, you will have to split up the budgets and यस। kind of spend a little bit more in getting relevant traffic to the website, because initially when you're just starting out, you need to first focus on bringing users to your website. You can't start out and expect 10 sales on day one. That will be a gradual journey. So you, when you start out, you need to sort of wait and kind of run both of the platforms, keep getting some relevant people from Google, and keep getting and discovering more audiences via Facebook. Once you have everything set up, then of course in Google and Facebook both, you have many more objectives to explore, and you can go ahead with discovery campaigns, and YouTube mein you can push in more. So I think that's how you should proceed. एंड फॉर सपोज अगर मेरे पास एक बजट है, फॉर सपोज 100 रुपए, तो मैं उसे कैसे हम्म। स्प्लिट आउट करूं इन दोनों में? 100 रुपए का बजट है तो अच्छा, मत वो तो करो। आपके लिए चिल्लड़ है, चलो हम एकदम इसे बढ़ा देते हैं, So 1 करोड़ रुपए का So I बजट है। would say when you're starting out, it also depends on what industry you belong to. So for हाँ। example, अगर आप fashion में हो, then maybe it's better to go a little bit higher on Facebook, because fashion में आपको बस image दिखानी है and people will come and purchase because they just need to look at it and like the product as it looks. When it comes to Google, if you're doing something like a food and drinks, health and wellness, maybe spend a little bit more on Google, because that is where you will get better traction. So in case of a fashion, I'd say go 20-80, 20 Google, 80 Facebook. In terms of health and wellness and food and drinks, maybe go 30-70 or 40-60. 30 being Google and 70 being Facebook, or 40 Google, 60 Facebook. And once we're all set up, and when we see that okay chalo हमारे लिए Google better perform करे, then you scale on that. सो बिल्कुल, बट अभी आपने बोला हमेशा हमारे को एक फेसबुक को हम एक ज्यादा बजट एलोकेट कर रहे हैं, वाई? मतलब हमेशा हम क्या फेसबुक से ज्यादा अभी हमारे पास सेल आ रही है, या मैंने मैंने जहां तक सुना है कि गूगल से हमारे पास साइट पे ट्रैफिक आता है, गूगल से हमारी ब्रांडिंग होती है, और फेसबुक से हम एग्जैक्ट सेल्स कर सकते हैं। आपको कितना इस बात Hmm. में सही लगता है? So that's exactly true, that Google will bring the relevant people onto your website. We can use Facebook to retarget that audience and convert them finally.
Just the thing is that, as I said earlier, Google may, if somebody is looking for your product, then only will you be able to show your ads. Whereas on Facebook, you're showing ads to people who are online and Hmm. who will sort of match your targeted audience. So it's slightly easier to spend on Facebook, and it's also easier to find prospecting audience on Facebook as compared to Google. Of course, on Google, if you're doing your discovery and YouTube campaigns the right way, you can also bring in a lot more newer audiences via those as well. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेरे को लगता है मतलब इस चीज़ में यहाँ पर तो अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बचता। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, हाउ शुड आई स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन फॉर माई बिजनेस? अब ना ये सारी चीज़ तो समझ आ गई, हमारे पास एक वेबसाइट होना चाहिए, हमारे पास एक ऑडियंस बेस होना चाहिए, एक इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, एक फेसबुक पेज होना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें चलिए मैंने बना ली, अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ? क्योंकि मैं तो आपको बताऊँ, मेरे को तो अगर मैं बोलूँ मेरे को कुछ नहीं आता। मैं तो यहाँ Hmm. पे बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत गूगल वगैरह के आर्टिकल्स पढ़े, मुझे ज़्यादा नहीं आता। अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ फ्रॉम अ लेमन लैंग्वेज, इफ आई से? From a layman language, I think you set up your Facebook business manager, you set up your page, Facebook ad account, you set up your catalog, and similarly on Google, you set up your ad account, you set up your merchant center, everything. And you just create that first campaign, एक campaign बना लो conversions objective के लिए for both of the platforms. And that's basically where you start. And there are a एंड lot of courses on both Facebook and Google, because of course if I get into that तो एक घंटा तो उसी में लग जाएगा. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। But I think there are Facebook and Google have a lot of good self-serve courses to just get that set up. And if you want to get an agency involved, or if you want to get a freelancer involved, feel free to do that. They can help you set everything up. But I think even before you reach out to any agency or any third party, you should at least have your assets set up. So you should have your Facebook website, you should have your social media pages, your ad account, your pixel on the website, your Google ad account. All of that should at least be set up, and you should own all of these assets before you get started with anything. And at that point, you set up your campaigns on your Facebook and Google ads managers. ऑन पॉइंट। आपने अभी बोला कन्वर्जन्स, डू कन्वर्जन्स मीन्स परचेजेस? Purchases, yes. So actually, conversions actually can be defined as an add to cart also. If I'm a very very new business, for me a हाँ, conversion might just be कि add to cart, कि मेरे को पहले add to cart तो आए, and then I can think बिल्कुल, about converting them. So बिल्कुल। it will depend on your business goal. When I'm starting off as a new एकदम newbie startup, maybe for me just business goal is to drive people to my website. Just a product view might be a conversion for me at that point, because that is what I'm targeting for. बिल्कुल। But when I become a little bit established, at that point, of course, purchases is going to be my ultimate conversion goal, that I want to drive purchases on the website. But on day one, it's possible that, you always start small. You take a baby step. You say यस, that, view my products. क्रॉल कर रहे So धीरे that धीरे। could also be exactly. So that could also be a conversion. Absolutely. And if I say, like, what is the percentage of add to carts, and what are the people landing on the website? How many of them are adding a product to the carts? How many are initiating the checkout? How many are purchasing that final products? So, is there any particular, or is there any base number which you can say, like, if 100 people are landing on the website, this should be the ideal purchases on the website, like 5, 6, 10, 20. See, this also varies a lot from industry to industry. For an apparel, that number, out of 100 people who are landing on the website, that number might just be a two or three people will convert. Whereas when it comes to let's say a health and wellness or a food and drinks, even more than five people convert. So it depends from industry to industry, and it will also, within the same industry also, it'll depend from website to website, depending upon the AOV also. Let's say if I'm Yes, selling a very lower value product, 1000 rupee product, my conversion rate might be much higher as compared to somebody who's selling a 10,000 rupee product. absolutely. So there are a lot of external factors also that will impact your conversion rate. To say that there is one base for everybody would be incorrect. गॉट इट। हाँ, वो तो मैं समझ गया। एंड मेरे को मतलब Hmm. इससे थोड़ा सा ये समझ आ रहा है कि आइडियली 5 से 6% का एक ऑन एन एवरेज अगर हम ले तो इतना कन्वर्जन्स आ जाता है, अगर हम अपने जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है एक अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजिक फॉर्म में ड्राइव कर रहे हैं तो। Yeah, आ सकता है, and 5 से 6 might be a little bit higher for when you come to fashion industry.
but maybe somewhere starting at a 3%, 2% Okay, or 3%, I would say. got it. And moving to the next slide. यस, सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ, अब ना मैं जैसे आई एकदम मैंने अपनी वेबसाइट बना ली, एक एक्स वेबसाइट बना ली, मैंने एक्स वाई जेड वेबसाइट बना ली, एकदम मैं मेरे को चाहता हूँ मैं उस पर ना लोग आ जाए, भर भर के लोग आ जाए, मेरी मतलब पहले इमीडिएटली क्या होता है? आई मीन व्हाट डू यू मीन इमीडिएटली? मतलब वेबसाइट बनी और 6 लोग तुम्हारी वेबसाइट पे पहुंच गए। आई मीन यू विल हैव टू सॉर्ट ऑफ डिफाइन, आई थिंक इमीडिएटली तो फिर बहुत सारी शेडी वेबसाइट्स भी हैं जो इमीडिएटली बहुत सारा ट्रैफिक ड्राइव कर देते हैं वेबसाइट पे। यस, सो वी डोंट वांट इमीडिएटली, वी वांट रेलेवेंट। आई थिंक क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, आई वुड क्वांटिटी, से। So you can, of course, when initially you are a very new startup and you don't have that many users currently, you can start off with certain traffic campaigns to drive some traffic to the website to kind of increase footfall onto the website. So if you want to drive traffic immediately, then then you probably do traffic campaigns. ओके। सो मतलब मेरे को इससे एक हिंदी भाषा में ना मैंने एक प्रोवर्ब सुना है, बड़े अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि यार एक पेड़ लगाओ, सेब का पेड़ लगाओ, 3-4 साल तक वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, 5वें साल के बाद वो खुद अपने फल देना स्टार्ट कर देगा। मतलब एब्सोल्युटली, इमीडिएटली तो बस इसमें कुछ 3-4 साल नहीं लगेंगे, प्लीज़ डोंट स्केयर द लिसनर्स, बिकॉज़ 3-4 साल तो नहीं लगेंगे। हाँ, वो तो 3-4 साल तो दोस्तों पेड़ में लगेंगे, यहाँ पे आपको 2-3 महीने लगेंगे, वो साल यस, जो है वो यस, महीनों में आ गया है यहाँ पे। यस, करेक्ट, करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, हाँ, ये भी आई थिंक बहुत एक Should we व्यू, do performance marketing in-house? Yes. You know, this is a question that a friend of mine asked me just like 2-3 days ago. हाँ, She has an e-commerce label of her own. She sells apparel. So she wanted to know. She tells me that, you know, every year we do this, that we change our agency, and there's so much volatility that one month we'll spend like 5 lakhs, the other month we'll spend like not even 50,000. So I think what I would say is initially do something on your own. Definitely, at least set that base. कि आप, you know, you get to know how the campaigns are run, how to measure the campaigns, what kind of key parameters are you looking at? Because if you don't know what's going on with your campaigns, how you gonna sort of coordinate with the agency that you're working with or with the बिल्कुल। freelancer that you're working with? अच्छा, So I would say you should always, sorry, just सॉरी सॉरी, one मैं last आपको thing, you should एकदम always, हाँ, एकदम बीच में मैं हाँ, कट करता have हूँ। your own learning कि इन हाउस कर लो, एंड फिर आप आउटसोर्स करो once you have a stable base, because you यस, can't or continue to do it on your own forever, because जब बिजनेस 100 करोड़ पे पहुंचेगा तो आप ये छोटी मोटी नहीं, चीजें मार्केटिंग जैसी जो है वो नहीं ध्यान दोगे। आई एम सॉरी, मैं एकदम आपको बीच में कट ऑफ कर रहा हूँ, बट ना मतलब इंडिया में ना लोग बाग अपने आप को समझते हैं यार, हमने ना 4 वीडियोस यूट्यूब के देख ली, अब तो मैं धमाका मचा दूंगा, अब तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का ना एक्सपर्ट बन चुका हूँ, मेरे को 1 लाख रुपए का बजट दे दो। और शायद आपने भी ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, मैंने भी एक दो ऐसे एग्जाम्पल देखे, 5 लाख रुपए का बजट लगाया, मतलब 100% भी रोआस नहीं आया, 1x भी रोआस नहीं आया, उसके बाद आके बोल रहे हैं भाई अब मैं क्या करूँ, मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, डूब गए। आई थिंक या, एंड देयर आर आल्सो पीपल हु विल डू मार्केटिंग बहुत कम स्पेंड पे हम शुरू करते हैं, एंड देन इट गिव्स अस सच गुड रिटर्न्स that we think कि वो at a bigger scale also it will give us the same kind of return. So that is also something that does not happen. तो यस, सी मतलब हम जब कोई नया फॉर एग्जांपल नया यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में तो बहुत व्यूअर्स आते हैं, बिकॉज हमारे रिश्तेदार ही इतना हमारी व्यूज करते हैं, दे लाइक आवर कंटेंट, but then to grow from that initial 40-50 people to 50,000 people is where the challenge comes in, and where the speed also becomes a bit slower. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा, मैं को ये बात बताइए, वैसे तो 1,000 रुपये आपके लिए चिल्लड़ होगा, बट अगर मेरे को 1,000 रुपये दिन का एक बजट लगाना है, तो मैं आपको कांटेक्ट या एडयोगी को कांटेक्ट कैसे करूं? आप और एडयोगी को एडयोगी थोड़ा सा कांटेक्ट कैसे हम मेरे लिए वर्क कर सकता है? एडयोगी एक नाम में ऐड आ रहा है, और योगी योगी से मुझे कुछ समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हेल्दी है। करेक्ट। सो आई थिंक टू डू दैट adyogi.com वेबसाइट है, एंड वेबसाइट में हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, हमारी ग्रोथ टीम बहुत अच्छे से डाउनलोड देती है कि एग्जैक्टली हाउ वी रन कैंपेन्स, व्हाट वी डू इन कैंपेन्स एंड व्हाट प्रोडक्ट्स। सो AdYogi में वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वी हैव अ सेल्फ सर्व प्रोडक्ट वेयर यू कैन रन योर ओन कैंपेन्स, वी हैव अ स्लाइटली मोर एनहांस्ड मॉडल वेयर यू विल हैव लाइक एन अकाउंट मतलब मैनेजर। मतलब जैसे मेरे को तो कुछ कुछ चलाना नहीं आता, तो अगर मैंने वो सेल्फ सर्व मॉडल ले लिया, तो मैं आराम से कैंपेन्स अपने चला सकता हूँ। अरे हम आपको सब सिखा देंगे।
अच्छा, सब So सिखाते the हैं। self-serve model is backed by a very strong team who is well versed in Facebook, Google campaigns, and they will help you through everything. They will guide you in setting up your campaigns, in running your campaigns, in optimizing your campaigns, everything. हम्म। मतलब जब थोड़ा सा मैं एक अच्छे लेवल पे आ जाऊं तो मेरे को ये आउटसोर्स ही करना चाहिए, बिकॉज आप जैसे वहां पे Absolutely. एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, और एक्सपर्ट लोग, हाँ मुझे पता है मेरा जो बिजनेस है ना, छोटे मोटे बिजनेस को एक अच्छा खासा 100 CR के बिजनेस पे स्केल करने में हेल्प करेंगे, और मुझे पता है आपके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी है 100 CR बिजनेसेस की, तो उसको भी हम सुनेंगे। 100 CR के बिजनेसेस को भी हम सुनेंगे, सक्सेस स्टोरीज सुनेंगे, बट वो आगे आने वाले एपिसोड्स में। बट आई थिंक अभी ना मेरे को लग रहा है लोग बाग थोड़े से उतावले हो रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस वो पूछ लें, एंड Q&A कर लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। Definitely. क्योंकि मेरे को इतना सारा जो आज ज्ञान का भंडार दिया आपने, इतनी सारी Hmm. आपने बातें बताई, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। हो सकता है मेरे को ये वाली वो जो वीडियो है एक दो बार मैं रिपीट पे लूप पे सुनूं, ताकि ना मेरे को सारी चीजें दिमाग में आ जाएं। और जो जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार हम तो सब कुछ कर लेंगे, हम तो अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स खुद चला लेंगे, हमारे पास तो दिमाग इतना है। मतलब मेरे को क्या लगता है, जो बंदा जिस चीज में स्पेशलाइज हो वो वही काम करना चाहिए। अगर उसका बिजनेस माइंड है तो वो ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ना जाए, अगर वो मार्केटिंग में है तो फिर वो ज्यादा बिजनेस की ना सोचे। Absolutely. I think to some extent हम खुद से कर सकते हैं, but at some point once the scale is large, you have to outsource so that that is one piece that you don't have to worry about too much. वो किसी और ने देखा हुआ है आप. There are so many other challenges in running a business. You can look into that. बिल्कुल। एंड दोस्तों, अगर अभी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बारे में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लेकर, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, एड योगी को लेकर, कुछ भी अगर क्वेश्चन है ना, तो वो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, यहाँ पे लाइव चैट में आप भेज सकते हो। आपके जो क्वेश्चन है हैंड टू हैंड एकदम हम एड्रेस करेंगे। इतने ना मानसवी से थोड़ा सा एड योगी के बारे में पूछ लेते हैं कि एड योगी कंपनी क्या है और कैसे क्या वर्क करती है। Well, AdYogi is a SaaS platform. It is a platform that has automated Facebook and Google ads. So it has made it simpler to run ads on Google and Facebook for e-commerce websites. So what we have done is the platform that we've created, it helps you run your e-commerce website की जो campaigns हैं, run those in an automated fashion on Facebook and Google. And what the AdYogi app does is once you create your ads campaigns, it'll help you optimize those campaigns. It'll help you set up everything very easily with the click of a few buttons. You don't have to go through the complex reporting that's there on Facebook, Google. We've simplified reporting to be relevant to e-commerce, because on Facebook, of course, reporting is for whatever objective you're choosing. But on AdYogi, we simplify the reporting to be very, very relevant and very specific to e-commerce brands. We give you performance reviews of your campaigns, your ads, how the products are performing, which categories are doing well, how the sales are trending, how's the revenue trending, all of that information, also on top of automating all of the ads for Google and Facebook. अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मेरे को लगता है AdYogi इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। मतलब मेरे को अब तक तो ये समझ आ चुका है, जिससे मैं बात कर रहा था ना वो ऐसे नहीं है आप शांत बैठे थे, पर दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ ना तो शायद ही मेरे साथ कोई बोल पाता है। बट आज मेरा शायद पहला सेशन होगा जब मानसवी ने बोला और मैं चुप बैठा हूँ। मतलब हाँ, बट मूविंग ऑन, मानसी मेरे को बहुत मजा आया आपके साथ ये सेशन करके, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव Same रहा। here. एंड Yes. आई थिंक जो हमारी ऑडियंसेस हमारे को देख रही है, ऑडियंसेस को भी काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं यार सब ऑडियंस को बोलूंगा कि जितने भी आपको और आगे आने वाले आपको किस किस तरह के पॉडकास्ट चाहिए, किस किस तरह की सीरीज चाहिए, वो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको किस किस तरह की सेशंस और चाहिए। बट जाने से पहले इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना है AdYogi चैनल को, बिकॉज अब हम आपके लिए ऐसे ही सुपर डुपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मानसवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you. Thank you so much, Harshit. It was great interacting with you. सेम हियर, सेम हियर। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, बाय बाय, Good night. लॉगिंग ऑफ।